नमस्कार उन्नत दर्शकों, मैं उपासक दृष्टा असिता हूँ, जो कि उस समय पूज्य भगवान शाक्यमुनि बुद्ध को देखने के लिए भाग्यशाली था जब वह हमारी पृथ्वी पर 2.5 सहस्त्र शताब्दी पहले आए थे। भारत के महान लोग आपके दयालु बोधि हृदय की प्रशंसा करते हैं। मानव जाति के इतिहास के दौरान दिव्य संदेश अक्षर रहस्य में डूबे रहते हैं। भविष्य वक्ता, मसीहा या जो भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, प्रायः सताए और प्रताड़ित होते हैं। उनके शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन हम सत्य को असत्य से कैसे अलग करें? ऐसा करने के लिए कोई केवल ईश्वरीय मार्गदर्शन पर ही भरोसा कर सकता है, और सच्चाई खुद को उन लोगों के लिए प्रकट हो जाती है जो ईमानदारी से इसकी तलाश करते हैं। मैत्रेयी बोधिसत्व के सूत्र में बुद्ध की प्राप्ति भगवान बुद्ध ने मैत्रेयी बुद्ध की भूमि के जादुई वैभव का विस्तार से वर्णन किया। उदाहरण के लिए, ऐसे चमचमाते फूल होंगे जो दिन रात खिलेंगे और कभी नहीं मुरझाएंगे। सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने पहाड़ रोशनी बिखेरेंगे और सुगंधित पेड़ पूरे देश में सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, जब भी यह प्रकाश द्वारा छू जाएंगे तो लोग खुश होंगे और बौद्धिक ज्ञान को सक्रिय करेंगे। क्या पृथ्वी पर इस तरह के अद्भुत स्वर्ग जैसे चमत्कार का संभव हो सकते हैं? हमारे एसोसिएशन के कुछ सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की शानदार वास्तविकता का अनुभव किया है, विशेष रूप से हमारे ध्यान केंद्रों पर जब सुप्रीम मास्टर चिंगाई की दिव्य स्थिति द्वारा आशीर्वाद दिया गया। Từ hôm thiền đến nay đấy, ngày nào con cũng sống như trong thần thoại sư. Good for you. Thì con thấy có rất nhiều những chúng sinh thiên đàng họ bay xuống, có những cái bông hoa đó sư phụ, ở địa cầu không có, nhưng chúng hình như là biết nói, màu sắc rất rực rỡ. Rồi có những cái ông sao á, nó phát sáng màu hồng, rồi có những cái tia nó gần như là tia hào quang, như nó xếp thành những cái hình để nó đến nó bay đến với con chẳng hạn. Rồi có rất là nhiều sư phụ, có những cái nó như là những cái đầu tiên thì con nhìn thấy nó như là cái hộp vuông thôi, và sau đó gia trì cho con rất là nhiều. Khi mà con chú tâm vào cái lực lượng đấy thì nó càng lớn hơn và càng lớn hơn, thì nó lúc đấy thì con hiểu nó không phải là cái hộp mà nó là giống những cái cây tâm linh phát sáng sư phụ. Hiểu. Nhưng mà con nhìn thấy nó, con tưởng nó rất là cứng sư phụ, nhưng thực ra nó không phải thế. Nó There's no shape, no substance actually, just look like. Dạ. Chiều nay khi bọn con đều có mấy cái sư tỷ ấy ngồi gần bọn con, thì tự nhiên cái cây đấy hình như là cũng vui sư phụ, nó phát ánh sáng ra, thế là nó làm cho con say ấy. It was my experience of this center, those places. It's really
it really is heaven. It's so abundant and beautiful, and its energy, even the things that I could see, and that the physical reality is only trying to mimic its beauty, but it's nothing of It's a copy. Yes. and it, because its real beauty is just amazing. And Yes. I made eye contact with one of the beautiful pigeons, and that pigeon knows that this is heaven, and that's why they're so at ease here. Thank you for creating this for all of us, because I could just see that this is what the whole planet's going to be like. If yes. Hopefully, yeah. Yes. So thank you. It's getting better, love. Yes. The whole planet will be similar and better. Okay? Soon. But you have to meditate, huh? At home. Or here, wherever you can. Okay? Try to concentrate more inside and positive energy and the real thing. Okay? अपने ध्यान के माध्यम से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को नीचे लाकर सुप्रीम मास्टर चिंगाई हमारी दुनिया को मैत्रेय बुद्ध की भूमि की तरह एक नई स्वर्गीय भूमि में बदल रही है। हमारे एसोसिएशन के सदस्यों में से एक ने उनके बदले हुए परिवेश का अवलोकन किया। The sun seems to be like a white crystal now instead of like the sun we used to see. And I know you talked about the blessings that come from the sun, but I wondered, what else? Or, why? It's so different. Yeah, because it changed also with blood blessing. Everything changed. It's just you don't see. You only see the sun. Yeah. Everything changed, but nobody see it. Just feel it. Somebody see it. Because the waves of blessing is from the utmost high universe, even above your skull. Imagine? Yes. The blessing energy is never have been like this. Not so strong, not so benevolent, not so generous, abundant. Therefore, everything changed, not just the sun. Just enjoy the energy. Enjoy the feeling that that something changed drastically for the planet. Despite all the things that we have seen, which is not so positive. But it's much better now. It changed so much that we have to change with it. Otherwise, we will be discarded. And it would take many aeons until you have this chance again to bathe in such sublime energy, supreme blessing that came from not just our regional universe, even beyond. Yeah. So this is a chance of a very many aeons to get one, because it's not always necessary to bring down such tremendous energy to this world. Understand that? Masters come and go, but it's not always necessary to do such thing. ईमानदार दर्शकों, हम एक संक्षिप्त संदेश के बाद वापस आएंगे। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहे। समझदार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में वापस स्वागत है।
अपने सूत्र में भगवान शाक्यमुनि बुद्ध ने कहा कि जो मैत्रेय बुद्ध की भूमि में पैदा हुए हैं वे मैत्रेय बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेंगे और ध्यान करेंगे। They will have wisdom, virtue, joy and peace as they gratify their five senses desires. Every day they will enjoy wonderful peace and bliss, experiencing deep meditation as their instrument of happiness. हम भी अपने संग में हमारी खुशी के साधन के रूप में ध्यान का अनुभव करते हैं। सुप्रीम मास्टर चिंगहाई को धन्यवाद जो हमें दीक्षा देते समय सच्चे थाई आनंद के स्रोत से जोड़ती है। The week right when I got initiated, people would look at me like I was crazy because I was just so filled with joy. I would just laugh uncontrollably. And you still do. Yeah. Yes, I still do. Yeah. I feel honored that you took me because I know people can look for thousands and thousands of years and not find what I've been blessed to find in this lifetime. Then I got on the path and everything became easy. More calm, more peaceful, more serene. ਹਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਸੌਖੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। bin Malerin. Sie können Bilder von mir sehen, bevor ich eingeweiht worden bin, die Einweihung erhalten habe von der Meisterin, wieder den Kontakt zu meinem innersten Selbst, zu meinem Göttlichen und das jeden Tag praktiziere. Seitdem ist das Leben viel schöner geworden und Sie können es an den Bildern sehen, die danach entstanden sind. उसी सूत्र में भगवान बुद्ध ने भी उच्चारण किया था कि मैत्रेय बुद्ध 3 ड्रैगन पुष्प धर्म सत्रों का आयोजन करेंगे जिसे शानदार और आकर्षक समारोह के रूप में भी जाना जाता है। यह कहा जाता है कि 9.6 बिलियन लोग पहले सत्र में भाग लेने से अरहतशिप आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करेंगे। दूसरे सत्र में 9.4 बिलियन और तीसरे सत्र में 9.2 बिलियन। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि वस्तुतः सभी लोगों को ऊंचा किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़कर। The Buddha doesn't just liberate his own disciples, official disciples. He liberates all beings on the same planet that he lives, as long as he lives. The Buddha doesn't have to even go in different places in the whole world to preach his doctrine. He even sit in one place and the whole universe heard him at that time. Similar to any saint at all, any prophet at all, any master at all, they work like that. They work inside with the souls. The Buddha deals directly with the souls of all beings. पृथ्वी पर बुद्ध की भूमि बनने के लिए हमारी दुनिया को उत्तेजित करते हुए सुप्रीम मास्टर चिंगाई ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने स्वर्ग में एक नई बुद्ध भूमि भी बनाई थी। Save all the people that no other master can save or wanted to save. Yes, Master. Thank you. Because I have created a special area, a special spiritual land for all of you and whoever, okay, under the wing, under my wing. Thank you. Thank you, Master. Because no other master wanted to save any of my so-called disciples. So I have to make a new Buddha's land, okay? Yeah. Wow, Master, which is thank you. Better, beyond and better than 5th level, okay? Wow, thank you, Master. Thank you so much. And we could save even the world, okay? 你们继续努力，诚心做好人，一定师父会带你们去那个新造出来那个天堂。
那边比任何的那个天堂都辉煌美丽快乐的。 अप्रैल 2019 में सुप्रीम मास्टर चिंगाई ने खुलासा किया कि निचले लोगों पर मृतक आत्माओं और आत्माओं को भी नई भूमि पर जाने के लिए मुक्त किया जा रहा था। And they just came to thank me for liberating them, because the retreat time is more intense to help the people. Not included lectures, listening attendance. You know, when I go out, people listen and they get also liberation if they're sincere, okay? If they want it also. These are only for the dead people who suffer, like in hell or in some unfavorable realm. So altogether it's about 731,114,123 souls. They all go to New Land. I mean, new spiritual Timkutus. So thank God we can do it now, finally, huh? Wow, they suffer long enough, don't you think? अभी हाल ही में सुप्रीम मास्टर चिंगाई ने अनगिनत आत्माओं के बारे में अधिक रोमांचक अध्ययन प्रकट करना जारी रखा, जिन्हें वह अपनी असाधारण भूमि पर जाने के लिए उत्थान कर रही है। All beings are or will be uplifted recently because your master is stronger now. All beings in these planets, as long as I live, as long as your master lives, she will uplift them all to the new land. But gradually it depends. But at least they're liberated. And you can be there with Timkutu all the time. To your heart content, yes. जैसे ही भगवान बुद्ध ने अपना सूत्र समाप्त किया, समारोह के लिए उनकी अंतिम सलाह आज भी हमारे लिए मायने रखती है। All of you should progress diligently, invoking your pure minds to do good karmas. Then there is no doubt that you will see Maitreya Buddha, the luminous lamp of the world. चमकीले दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड को देखना न भूलें, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम मैत्रेय बुद्ध को कैसे पहचान सकते हैं और स्वर्ग युग में शामिल हो सकते हैं। आगे आ रहा है पिता